only 5 representatives of the states. So here, so that means majority of the states can't able to register their opinion in the Bureau of Energy Efficiency. That means the central government is curtailing the right of the states. Yes. So each and every state have the right to register their opinion. So it should be protected. The state, representative of the state should be there. This is my request. Respected Chair, this is also not only the problem of the states, it is a problem of entire people. Another point is representation of the farmers. So dear sir, respected sir, so there, the representation of the farmers is not there. In India, the energy consumption, 30% of the energy consumption is in the farming sector. But in this bill, they are not considering the farm sector. Here, in Bureau of Energy Efficiency, there, the representative of the big corporates are there, including industrialists and big manufacturers. Then why they allowed the representative of the farmers and workers? This is a very serious question. So, the representative of the farmers and workers should be there. This is another request from me. So, respected Chair, another point is carbon trading and energy conservation methods. The carbon trading and energy conservation methods is states to states, that is different. So the state-specific issues are there. So the government, the union government, should give the right to the states for managing this energy conservation procedure and method. So the right of the state should be protected there also. The building status is also covered in this bill. So there, unilaterally, the union government proposed their own specification. The unilateral specification is not good for the development of energy sector in our country. Yes. So state level specification that state will make, the union government should provide the right to the state for making the specification of the building. It should be corrected and it should be included in the bill. The last one regarding the state level designated agencies. Here in this bill, union government has proposed some new agencies for managing the things. So my request, some states, the state level designated agencies are working very well. So that right of these agencies, including Kerala and other states, it should be protected, and government should allow to work, to continue their work in these states. So independently and an autonomous decision also very important for the development of the energy sector. So this is my point. Thank you, sir. Thank you. Dr. V. Sudhasanji. Sri Vaiko. Mr. Deputy Chairman, Sir, I am so thankful to you for the opportunity given. In the year 1917, when the great October Revolution took place, after the victory, the great Lenin stated, let us get energy, power, we will lead all the other nations. Here, the original act, Energy Conservation Act 2001, provides a framework for regulating energy consumption and promoting energy efficiency and energy conservation. It will enable using less energy to perform the same task. The Act has set up the Bureau of Energy Efficiency to recommend regulations and standards for energy consumption. These apply to appliances, vehicles, industrial and commercial establishments and buildings. During the COP26 summit in 2021, that is last year, India made the following commitments which may be relevant for energy efficiency efforts. 1. Reducing total projected carbon emissions by 1 billion tons by 2030. Second, reducing the carbon intensity of the economy by 45% by 2030 over 2005 levels. Carbon intensity is defined as the volume of
carbon emissions per unit of GDP. In addition, India aims to have 500 GW of non-fossil energy capacity and meet 50% of its energy requirements from renewable energy by 2030. Against this backdrop, the Energy Conservation Bill was introduced in Lok Sabha. The bill seeks to amend the 2001 Act to facilitate the achievement of the COP26 goals and introduce concepts such as mandated use of non-fossil resources and carbon credit trading to ensure faster decarbonization of the Indian economy. The bill empowers the central government to specify a carbon credit trading scheme. The carbon credit implies a tradable permit produce a specified amount of carbon dioxide or other greenhouse emissions. The central government or any authorized agency may issue carbon credit certificates to entities registered and compliant with the scheme. The entities will be entitled to trade the certificates. The Act empowers the central government to specify energy conservation code for buildings. The code prescribes energy consumption standards in terms of area. The bill amends this to provide for an energy conservation and sustainable building code. This new code will provide norms for energy efficiency and conservation, use of renewable energy, and other requirements for green buildings. The bill provides for provisions including residential buildings which have minimum connected load of 100 kilowatts. In my view, it should be applicable to commercial buildings only, and residential buildings should be excluded from this provision because there will be very few residential buildings which have a load capacity of 100 kilowatts. The amount of penalty is also very high, namely rupees 10 lakhs for the violation. It should be reduced to a reasonable amount. The provision of high penalty amount would encourage corruption and harassment to the genuine consumers. The bill provides for increasing the governing council members up to 37. Since most of the functions fall under the state jurisdiction, the government should provide membership for each state in the governing council so that there will be proper coordination and understanding. Though Bureau of Energy Efficiency is the regulatory authority, without the cooperation of the state governments, they cannot discharge their functions successfully. The governing body of the Bureau of Energy Conservation have underutilized the funds by about 50% in the last 2 years. This has to be taken very seriously. Moreover, the government should launch a campaign for energy-saving bulbs like LED among the general public so that the energy can be saved. The Union government should launch a special scheme of distributing LED bulbs at subsidized rates so that more people, especially middle class and poor people, would purchase and use them. This government has reduced the budget for Solar Energy Corporation, which is the only public sector undertaking run by the Ministry of New and Renewable Energy, from rupees 1,800 crore last year to only rupees 1,000 crore this year. What is the justification? You have to increase the solar energy. You have to increase the generation of solar power. We have trained manpower. We have the land. We have the sun. At the same time, around 60% subsidy on solar panels is being reduced by this government, and GST on it has been increased from 5 to 12%. Where is the justification? The import duty for the solar panels has been increased. I appreciate the government wants to encourage the domestic manufacturing companies, but the domestic manufacturing companies have to import certain components from abroad. This import duty is going to cost them very heavily. I will take only 1 minute, sir. In our region, in Tuticorin, Kanyakumari, Nagarkoil, wind energy is being produced, but you are reducing the fund allocation. You should encourage more such renewable energy system which does not pollute the environment. The jurisdiction of Bureau of Energy Efficiency in regulating carbon trading is questioned because generally it is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change that is the nodal ministry in the matter of conservation and carbon credit trading, greenhouse gas emission. Therefore, the Honorable Minister should involve
the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in all policy matters. So I request the Honourable Minister to consider all these things so that we can give a better environment to the next I'll call next speaker, Mr. Yes, sir. Vaiko. I have completed, sir. Yes, Now- thank you. Thank you. You have taken 3 minutes extra. Please. Madam Fauzia Khan. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. Sir, we are part of a rapidly evolving world. The world today has evolved to such an extent that given a choice, many of us would rather stay hungry than allow the power of our cell phone to die. It's extremely difficult to comprehend that the first ever cell phone with internet was invented in the year 2001, just around 20 years earlier, sir. In the very same year, the Energy Conservation Bill, the Act of 2001, was passed in this House, sir. The amendment, sir, is a welcome one and a most needed one, taken into account the pace at which the growing and evolving human race is needing power or energy to survive. Sir, countries have started coming together across borders to utilize available resources to sustain the demand of the ever-growing power requirement. Each country is trying to use the resources that Mother Earth, Mother Nature, has blessed it with, while simultaneously trying not to allow the earth to be damaged. So it's the question of the survival of the planet today for all of us. The theme of India's G20 presidency is extremely relevant. Vasudhaiva Kutumbakam, or one earth, one family, one future. Different countries, sir, are blessed with different resources compared to each other, like fossil fuels, natural gases, wind, river, and the sun. Our nation must be appreciated for having accomplished the task of connecting more than 28 million homes in less than 1,000 days. However, we must also take into account, sir, that to supply power to these 20 million houses and the rest of the nation, we import more than 85% of power in the form of fossil fuels and other natural gases, sir. Even the components of the solar industry, like the photovoltaic cells, are majorly imported from other countries. And this cost of import has been eating away our ability to R&D, sir. India is blessed with the power of the sun, wind, the seas, and the river. But to harness the energy from these sources, we have to take many steps towards R&D, sir. Luckily, the sun shines brighter on our country, but the sun doesn't shine all the time. So, sir, cost-effective, high-power density batteries must be developed, and to do that, we must increase our R&D budget from 0.6% of our GDP to a much higher percentage, like other major economies, like China 2.4% or the US 3.06%. So it's time that we increased our R&D budget for the department, sir. Sir, the bill also addresses the building codes, which is a very welcome amendment. But how can we ensure that the local governments implement them? And unless these are implemented and followed up, a legislation is just a futile exercise. As honorable member in this House, Abhishek Manu Singhvi ji has rightly said, India is an over-legislated and an under-enforced country. Making laws is not enough. Sir, it has to be an interministerial, interdepartmental, at every level approach, right down to the farmers. There is too much energy conversation, it is said. There is too much energy conversation instead of energy conservation. So, sir, let us walk the talk.
Sir, the stubble burning issue of Delhi, Haryana, Punjab and UP can be addressed and in fact utilized if industries are allowed to upgrade their boilers and utilize the energy that is in the form of crop stubble that possesses immense potential energy that is wasted in thousands and thousands of hectares of land, causing uncontrollable pollution. So my suggestion is, while the carbon trading and the carbon market ecosystem is being developed, can we integrate incentivizing of issues such as the stubble burning and the use of mountains and mountains of garbage in and around the capital as biomass fuel in combination with corporate social responsibility for industries, and also incentivize individual farmers with a system of carbon credit which could be sold to the industries. So this will create awareness and build up a movement. वतन की फिक्र कर, नादान मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में. धन्यवाद सर. Thank you. Honorable Shri G.K. Vasan. Honorable G.K. Vasan. माननीय शक्ति सिंह गोयल. धन्यवाद उपसभापति महोदय. मैं ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक के ऊपर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं. माननीय उपसभापति महोदय, मैं बिल के उद्देश्य और कारण देख रहा था. कोई दो राय नहीं हो सकती है कि इस दुनिया में या देश में पर्यावरण अच्छा हो, क्लीन एनर्जी के लिए हम चिंता करें, क्लाइमेट चैलेंज की चैलेंज हमें ना रहे, चेंज की चैलेंज हमें ना फेस करनी पड़े, अच्छी बात है. पर उद्देश्य और कारण के साथ साथ जो बिल के प्रावधान है उसमें काफी कुछ हो सकता था, नहीं किया गया है. इस बात का मुझे दुख है. आप दिखाने के दांत कितने भी अच्छे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. चबाने के दांत कैसे हैं आपके, उसके ऊपर आधार रहता है. और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कहा जाता है माननीय उपसभापति महोदय कि रुपया बचाया वो रुपया कमाया के बराबर है. आपने बिल में इसकी चिंता नहीं की. जो आपके खुद के मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट का ओजोन सेल है, उसने कहा है आपको कि ये जो कूलिंग डिमांड एक्शन प्लान बने और कूलिंग डिमांड कम हो, उसके लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए. यह आपको बताया गया है, आपको आगाह किया गया है, लेकिन आप इसकी चिंता नहीं करते हो. आपका टारगेट जो दिया गया है वो ये है कि 20 से 25% कूलिंग एनर्जी डिमांड में बाय 37-38 में आपको कम करनी है. आपका अगर मनोज झा जी सही कह रहे थे, अगर ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता, ये सारी चीजों का अध्ययन होता, आपको दिखाया जाता सही रास्ता और इसमें आप प्रावधान करते तो अच्छा होता. क्योंकि ऑक्सफोर्ड इंडिया स्टैटिस्टिकल सर्वे में यह आया है कि आज हमारे वहां 8% हाउस होल्ड है वो एसी यूज करते हैं, लेकिन 10 साल बाद हमारे देश में सिनेरियो होगा कि 40% इंडियंस, 40% भारतीय एसी यूज करने की नौबत आ जाएगी. करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जरूरत बन रही है. रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, यही कहता जो आपको जो कहता था कि आपके दिखाने के और चबाने के अलग है. आप कहते हो कि आपको क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना है. आप कहते हो कि हमें जो पर्यावरण को नुकसान देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस का गैस, उसे रोकना है. और आप क्या करते हो, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट जिसके पर जीएसटी 5% था, आपने इसको बढ़ा के 12% कर दिया. क्या ये आपके कदम है? मैं गुजारिश करूंगा मंत्री जी को कि फाइनेंस मंत्री जी से बात कीजिए और इसको कंट्रोल में लाने का काम आपको करना पड़ेगा.
माननीय उपसभापति महोदय, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इट्स अ कंकरेंट लिस्ट एंट्री 38 के तहत है। हर राज्यों की अपनी अपनी परिस्थिति अलग है। आप सेंट्रल कानून बनाने की बजाय आप स्टेट को कहते और हर राज्यों को कहते कि एज पर कंकरेंट लिस्ट एंट्री 38 हमारा भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है। हम उस टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं जहां पे हम 40% फॉसिल फ्री एनर्जी का सर्जन करना चाहते हैं। आप कानून बनाइए तो हर राज्य अपने हिसाब से करता है। हम राज्यसभा में बैठते हैं, हम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं मानता हूं कि राज्यों को आप फेडरल स्ट्रक्चर में हो सकता है कि आपको कहीं बहुत बहुमत मिल जाता है और कहीं आपके हाथ से शासन चला जाता है। ये दौर है लोकतंत्र का, चलता रहता है। पर फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों के अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आगे बढ़ाने की बात को जोर देता हूं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे और क्लीन एनर्जी आपकी हुई और एक बॉटलनेक होगा तो फायदा क्या मिलेगा आपको इससे। तो इसलिए मैं ये भी गुजारिश करता हूं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम सोलर एनर्जी पैदा करते हैं, रात में तो सन नहीं है और जरूरत होती है रात को 8 बजे के बाद, दफ्तर से छूटे, बिजनेस से आए, बाहर से आए, घर में फैमिली साथ बैठेगा, ऊर्जा की खपत ज्यादा होगी। तो क्या उस वक्त पे वो एनर्जी वहां पे दिन की बनी हुई सेव हो सके, उसके लिए कोई ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा R&D हम करेंगे या नहीं। मैं माननीय उपसभापति महोदय ये कहता हूं कि एक परिवार गया एक साधु के पास और उन्हें कहा कि ये बच्चा जो हमारा है वो गुड़ बहुत खाता है, डॉक्टर कहते हैं कि इसके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो हमारी नहीं मानता है, आपकी सुनेगा, आप कह दो कि गुड़ मत खाए। वो गुरुजी ने कहा कि 15 दिन बाद आना। परिवार वापस चला गया। 15 दिन बाद आए, गुरुजी ने बच्चे को कहा कि गुड़ मत खाना, सेहत के लिए अच्छा नहीं। वो परिवार ताज्जुब हो गया कि क्या हो गया, यही बात 15 दिन पहले कह देते। क्यूरियोसिटी से जब पूछा तो गुरुजी ने कहा कि मैं खुद बहुत गुड़ खाता था, मैं बच्चे को कैसे कहूं कि तू गुड़ मत खाना। तो मैंने कहा 15 दिन के बाद मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया और फिर कहा। मैं इस सरकार को भी कहना चाहता हूं कि आप भाषण तो अच्छे देते हो कि दफ्तर में पंखा बंद करो, पर आप क्या करते हो उसको तो कभी देखा करो भाई साहब। क्या जरूरत थी? आप कहते हो कि एनवायरनमेंट बिगड़ रहा है, दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ये बहुत बढ़िया बिल्डिंग में हम बैठते थे, आपने क्यों ऊर्जा का खपत किया? एनवायरनमेंट खराब करने के लिए विस्ता प्रोजेक्ट की क्या जरूरत थी? तो आप पहले गुड़ खाना बंद कीजिए, दूसरों को सलाह देने से पहले। और मैं उस गुजरात से आता हूं माननीय उपसभापति महोदय, जहां महात्मा गांधी जी की विचारधारा और महात्मा गांधी जी की असर थी। गांधी जी ने भी कहा था, और मैंने बहुत कम उम्र में कॉलेज में पढ़ता था और आ गया विधानसभा में और एक लंबे अरसे तक विधानसभा का रिप्रेजेंटेटिव रहा। मैंने बदल के दौर को देखा है। वहां गुजरात में मैंने देखा था, हमारे एक मंत्री हुआ करते थे बाबूभाई जसभाई पटेल, जो पहले मुख्यमंत्री थे, और कितनी आज तो एनवायरनमेंट की इतनी चैलेंज है। उन दिनों में अगर वो किसी सर्किट हाउस के कमरे में है, बाहर निकलने से पहले हर बल्ब को बंद करेंगे, कहीं पर एक भी लाइट खुली नहीं छोड़ेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। वो कभी भी मुख्यमंत्री थे, एक बार भी चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली नहीं आए, वो हर बार सर्विस फ्लाइट से आते थे और वो कहते थे कि हमें ये अधिकार नहीं है कि हम एनवायरनमेंट को भी खराब करें। कभी कभी मंत्री के तौर पे मैं उनके साथ मिनिस्टर रहा, एक प्रोग्राम साथ में होता था, वो कहते थे 2 गाड़ी लेके क्यों जाए, 2 टीए बिल क्यों बने, खर्चा क्यों बढ़े सरकार का, हम दोनों एक गाड़ी में जाएं। और एक गाड़ी में दूसरे मंत्री के साथ जाने वाले भी देखे मैंने। वो दौर भी देखा, एक और दौर भी देखा
जहां कभी मुख्यमंत्री सर्विस फ्लाइट से नहीं, बेस्ट वेल लग्जूरियस एयरक्राफ्ट पे बिना मुख्यमंत्री गुजरात के दिल्ली नहीं आ सकते थे। वो दौर भी मैंने देखा। मैं माननीय उपसभापति महोदय यही कहता हूं कि हमें जो इस बिल के अंदर प्रावधान करना चाहिए था, उसमें खास आप कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की बात करते हो और उसका रेगुलेशन कौन करेगा कार्बन ट्रेडिंग के लिए। जैसे कि हम शेयर का ट्रेडिंग करते हैं तो सेबी है, इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेबी रेगुलेट करती है। इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडिंग होता है, आपका सेंट्रल सर्क जो है इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सेंट्रल रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, वो उसका रेगुलराइजेशन करता है। एक मिनट दे दीजिए। और उसी तरह से आप अगर कार्बन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए कोई प्रावधान आपके इस बिल में नहीं है। माने दिखाने के बड़े हैं, चबाने के नहीं है। अच्छी मंशा हो तो अच्छा काम भी उसी दिशा में हो। इन्हीं बातों के साथ मैं मेरी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। माननीय रामचंद्र झांगरा, माननीय रामचंद्र झांगरा जी। धन्यवाद मान्यवर, आपने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है। मैं एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक 2001 में अस्तित्व में आया था, जैसे फौजिया खान जी ने बताया। अब इसमें कुछ नए संशोधन किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि कार्बन व्यापार, जीवाश्म ईंधन का कम से कम प्रयोग, और सबसे मुख्य जो बात इस बिल का उद्देश्य है कि हम एनर्जी का उपयोग जो करें, दिमागहीन और विनाशकारी उपयोग की बजाय सावधान और जानबूझकर उपयोग करें। हम जब टीवी खोलते हैं तो आधे से ज़्यादा दुनिया प्राकृतिक आपदाओं की चपेट के अंदर हम देखते हैं। कहीं बर्फीला तूफान चल रहा है, कहीं गाड़ियां बाढ़ के पानी के अंदर बहती हुई जा रही है, और कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं। आधे से ज़्यादा दुनिया प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में है, और ये सब कुछ दिमागहीन ऊर्जा के उपयोग की वजह से ये हुआ है। ये संशोधन विधेयक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी दूरदर्शिता पूर्ण सोच का एक नतीजा है। जैसा गीता में कहा गया है कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पसंतो मुने। क्या आम आदमी जिन विषयों के प्रति सोया रहता है, नहीं सोचता है, मुनि व्यक्ति अग्रिम में उन विषय के बारे में सोचता है, अग्रिम में प्रबंध करता है। हालांकि हमारे भारत का जो है अभी जो उत्सर्जन का जो रेट है, दुनिया के अन्य जो विकसित देश हैं उनसे बहुत ज्यादा कम है। भारत का उत्सर्जन में 1.9 टन है, जबकि अमेरिका का 15.5 टन है और रूस का 12.5 टन। इसकी तुलना में भारत का 1.9 है। फिर भी भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अग्रिम प्रावधान किए, और हम कह सकते हैं कि इस समय भारत का स्थान ऊर्जा के संरक्षण में उपयोग में चौथा स्थान है। हम जो विंड पावर है हमारी, उसमें भी हमारा दुनिया के अंदर चौथा स्थान है, और सोलर पावर में भी हमारा दुनिया के अंदर चौथा स्थान है। ये हमारे बेहतरीन प्रयासों की जो सरकार की एक नतीजा हम सब के सामने है, जिसकी वजह से भारत फिर भी प्राकृतिक आपदाओं की चपेट से बचा हुआ है। तो ये बिल आगे आने वाले समय के लिए हमें प्राकृतिक आपदाएं ना झेलनी पड़े। जिस तरह से दुनिया बर्फीले तूफान, ज्वालामुखी फटने के कारण और बाढ़ की चपेट के अंदर है, वो विनाशीला भारत को ना देखनी पड़े, इसके लिए अग्रिम में प्रबंध के लिए ये विधेयक, संशोधन विधेयक लाया गया है। इसमें जैसे मेरे बहुत से साथियों ने, माननीय सांसदों ने चर्चा की कि अन्य मंत्रालयों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। वाइको साहब ने भी
चर्चा की थी कि इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। तो सदन की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो गवर्निंग काउंसिल है उसका दायरा इस विधेयक के अंदर बढ़ा दिया गया है और जो अन्य संबंधित मंत्रालय हैं जिनका वाइको जी ने भी चर्चा किया, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और अन्य मंत्रालयों को भी शामिल किया गया है। और केवल मंत्रालयों को नहीं, यहां तक के जो नॉन गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स हैं उनको भी गवर्निंग काउंसिल के अंदर शामिल किया गया है और इसकी संख्या 4 से 7 बढ़ा दी गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और मैं सदन की जानकारी के लिए ये बात चर्चा करना चाहता हूं कि सरकार ने जो पहले प्रबंध किए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से एनर्जी को बचाने का उपबंध किया गया हर लिहाज से। 2021 तक 1.22 करोड़ स्ट्रीट लाइटें एलईडी की कर दी गई। ये भारत सरकार का बहुत बड़ा बेहतरीन प्रयास हुआ और इसके अंदर 8.2 बिलियन यूनिट की बिजली की बचत हुई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। पहले से सोच के ये काम पहले से शुरुआत जो कर दी गई सरकार द्वारा, इसी प्रकार 10,451 इमारतों में एलईडी बल्ब, 5 स्टार पंखे, 5 स्टार गीजर्स, 5 स्टार एयर कंडीशन के माध्यम से बहुत बड़ी ऊर्जा की बचत भारत सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर भी की है। भारत के अंदर 24% जो बिजली की जो खपत होती है वो हमारी रिहायशी बिल्डिंगों के अंदर होती है और काफी लंबे समय से बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से चलता रहा कि बगैर एसी के अंदर कोई, एसी के बिना कोई रह ही नहीं सकता। पानी भी गर्म चाहिए, गीजर के बगैर काम नहीं चलता, एसी के बगैर काम नहीं चलता। और जो ये प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, हम देख रहे हैं कि अब साल के अंदर 10 महीने गर्मी पड़ती है, वरना हमने तो बचपन से देखा था कि चौमासा सिस्टम हमारे भारतवर्ष में था। 4 महीने गर्मी पड़ती थी, 4 महीने सर्दी पड़ती थी और 4 महीने बरसात का सीजन होता था। चौमासा सिस्टम था। आज जो हमने प्रकृति के साथ जो दुनिया ने छेड़छाड़ की है, अंधाधुंध वायुमंडल के अंदर कार्बन का उत्सर्जन किया है, अंधाधुंध फैक्ट्रियों के माध्यम से, व्हीकल्स के माध्यम से जो गर्मी वातावरण के अंदर गई है, उन सब के कारण आज ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज दुनिया के सामने है और साल के अंदर 10 महीने अब गर्मी पड़ती है। दिसंबर, आधा दिसंबर के अंदर हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अभी भी कोई सर्दी का कोई एहसास नहीं होता विशेष तौर के ऊपर। साल में 10 महीने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ने लगी है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज दुनिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इसको समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाला समय पूरी मानवता के लिए ही बहुत खतरनाक होने वाला है। इसीलिए ये एनर्जी कंजर्वेशन जो बिल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके अंदर जो प्रावधान किए गए हैं। मैं थोड़ा सा और आगे जानकारी के लिए मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। जैसे पीछे चर्चा में भी आया है, इसके ऊपर वैसे डिबेट में काफ़ी ग्लासगो कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट का भी जिक्र हुआ है और ये भी आया था चर्चा के अंदर कि 45% उत्सर्जन की रोकथाम की जो हमारा जो टारगेट था 2030 तक। मैं प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व को यह धन्यवाद देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 2030 तक का जो 45% का जो टारगेट था, हमने 2022 में उसको 40% तक उसको अचीव कर लिया है। ये बहुत बड़ा एक एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और वायुमंडल में जो अंधाधुंध उत्सर्जन है, जो गर्मी का, जो कार्बन का, उसको बचाने के लिए भारत सरकार का बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। तो मैं इस बिल का समर्थन करते हुए ये कहना चाहता हूं कि काफी हमारे साथियों ने सुझाव दिया कि इसको स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेज दिया जाए। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हम लोग ही तो होंगे, हमने तो बैठ के उसके अंदर चर्चा करनी है। तो चर्चा के लिए यह खुला स्थान है, सब लोग चर्चा में भाग ले रहे हैं, सब लोग महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं, सबके सुझावों को नोट किया जा रहा है। तो कोई भी अच्छा काम हो उसमें अनावश्यक देरी नहीं लगनी चाहिए और अच्छा काम जितना जल्दी कर लिया जाए
उतना ही बेहतरीन होता है, वो राष्ट्र के हित में होता है, वो मानवता के हित में होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद भांगड़ा जी। ऑनरेबल जी के वासन, नॉट प्रेजेंट। माननीय अब्दुल वहाब जी। Thank you, sir. Thank you for giving me a chance. Everything is said almost, and according to my last speaker, there is no need of discussion also. The standing committee is not required, select committee is not required. Here also people are not. You can pass, get the bill and pass immediately. That is the only way still people are thinking. But if you can give this bill little more back, maybe last year, it will be more better. But regarding this establishing carbon markets, I want to ask you, through you, but the bill is silent on who will regulate the carbon credit market. It is the Bureau of Energy Commission. This is the only one agency. How all this, all India, how can they manage one single agency? And certification, certificate is charging, I heard. I don't know exactly, the minister will say. In other countries, there is no charge for the certification. And I recommend it should be provided free to encourage participants in the scheme. Bill inter alia seeks to amend the penalty provisions. Penalty is not categorized, small, medium, heavy. It should be for a small consumer just like me. I have invested money in solar, but after investing money, the government is telling, no, this is not the rate, now we have reduced the rate. This should not be happening, and the penalty should not be there for the consumers or low-income groups or what you call medium, small entities. One more thing, enhance the energy conservation building code. There is a concern that maintenance fees of residential buildings will increase with this new energy efficient infrastructure. This is, in a way, it will open a big, what you call, sort of Pandora's box. Yeah, Pandora's box. Now itself for a building, I don't know how many months to go for a building to be passed from municipalities or government agencies. How many things to be, I am not indulging on that issues. But this will again, one more step is there, so there definitely the municipalities or corporation will or officials will take maximum advantage of this one. So some general comments on the bill is, the government should play a proactive role in providing infrastructure for renewable energy sources and carbon trading mechanism instead of giving the whole burden to the private sector, ultimately consumers. The government should finally financially assist the already existing buildings, residential buildings, to comply with the norms and reduce their carbon footprints. This is I urge the minister to reconsider and be it is a consumer-friendly bill. Thank you very much. Thank you, Manya Abdul Wahab ji. Dr. Ashok Bajpai. Dr. Ashok Bajpai, not present. Sri Maharaja Sanjova Lesimba. Sri Maharaja Sanjova, please speak. Sir, thank you, Honorable Deputy Chairman and Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, and the leaders of my party, BJP, for giving me this opportunity. And I rise to speak in support of the bill, sir. Sir, the Energy Conservation Amendment Bill 2022, which was introduced in Lok Sabha on 3rd August 22 and passed in the same House on 8th August 22, is to amend the Energy Conservation Act 2001 and to empower the central government to specify a carbon credit trading scheme. The bill also aims to reduce carbon emissions and to address the climate change and find out non-fossil energy sources to meet the requirements. Sir, the bill also seeks to provide regulatory frameworks for number one, carbon trading in India,
Number 2, encouragement of penetration of renewable in energy mix. Number 3, effective implementation and enforcement of Energy Conservation Act. Sir, energy conservation means reduce the consumption of energy or limited the use. It means use of fewer energy service or use devices which require less energy, thus promoting conservation of energy. Air pollution due to burning of fossil fuel causes several harmful diseases in human and animals. Using less energy or conserving energy reduces living expenses and protects the environment from excess use and carbon dioxide emissions. Sir, India has already announced at COP26 Conference of Parties at Glasgow 2021 the following main points. Point number 1, 500 gigawatts of electricity from non-fossil fuels by 2030. Point number 2, reduction of carbon emission by additional 1 billion tons and reducing carbon intensity economy less than 45%. Number 3, net zero emission by 2070. Sir, this clearly shows India's sincere determination to work for low carbon emission in combating the climate change and also endeavoring to achieve sustainable development goals. Sir, India's sincere effort of NDC, nationally determined contribution, has made changes in climate action much before 2030. Sir, India is the only G20 nation to be in line with 2 degrees centigrade warming because of its climate action. The per capita energy consumption of India is 1/3 of the world average, whereas carbon emission is 1.9 ton of CO2 in 2019 compared with 15.5 tons for the US and 12.5 tons for Russia. That year, despite India being the home of 1/6 of global population. Globally, India stands fourth in renewable energy power capacity and fourth in wind power and also fourth in solar power capacity, having one of the highest growth rates for renewable energy in the world. According to Global Trends in Renewable Energy Investment, 2020 reports India attracted an investment of US $64.2 billion in our currency, rupees 4.7 lakh crores during 2014 and 2019. Sir. Amidst growing energy needs and the changing global climate scenario, the Government of India is trying to enhance the capacity of renewable energy by proposing amendments to Energy Conservation Act 2001. The objective is to enhance demand for renewable energy for sectors such as industries, buildings, and transports, etc. The Energy Conservation Amendment Bill 2022 is very much necessary to meet the additional energy requirements for sustainable development as well as a green economy. To attain India's motto, leave no one behind, the Government of India is trying to work collaboratively with domestic and global stakeholders in the energy sector for a sustainable non-fossil energy generation. Sir, in the conclusion, many countries in the world are making amendments and the changes in the energy sector not to affect the climate change, giving focus on clean energy and energy conservation. India's progress is very impressive and making nationally determined contributions as announced at COP26 at Glasgow 2021. The Energy Conservation Act enacted in 2001 and which was amended in 2010 is necessary to make amendments again due to emergence of new factors. Sir, factor number 1, to promote new and renewable energy sources. Factor number 2, development of a domestic carbon market. Sir, justification of amendment is, sir, the amendments include such as carbon trading and minimum share of non-fossil consumption, as well as keeping the country with sustainable development and keeping country's commitment related to climate change. The energy efficiency will be broadened into energy transition, giving focus on the reducing of carbon footprints
of our economy. However, the bills will support the industries to grow in a sustainable manner. The proposed amendments shall promote use of non-fossil energy sources, including green hydrogen, green ammonia, and making penalties for offenders more effective. Sir, there are also many major amendments in this bill. Number one, legal framework to mandate use of non-fossil sources, including green hydrogen, for energy and feedstock. To reduce carbon emission of Indian economy, we have to use non-fossil energy sources and feedstocks like green hydrogen, green ammonia, biomass, and ethanol, etc. And point number two, framework for carbon markets. Climate change has become the most important sector of entire ecosystem. Carbon emission from fossil fuels or greenhouse gas emission is responsible for global warming. Nowadays, carbon markets are playing a very important role in the reduction of carbon emission, and the carbon trading can be applied to the private sector also. Sir, number three, major amendment, bringing large residential buildings within the fold of the energy conservation regime. Residential buildings consume about 24% of total electricity in India, and this sector is poised for an exceptional growth during the next 2 decades, with an estimated addition of about 3 billion square meters by 2030. The proposal includes expanding the scope of building to include large residential building with connected load more than 100 kilowatts or 120 kVA, sir. And sir, increasing the scope of energy conservation building code, the idea of lifestyle for environment movement, which was introduced by our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, during the 26th United Nations Climate Change Conference, COP26 at Glasgow, 2021. The idea promotes an environment-conscious lifestyle that focuses on mindful and deliberate utilization instead of mindless and destructive consumption. The scope of energy conservation building code ECBC is proposed to be widened to include renewable energy and sustainable building concepts, and to be renamed as Energy Conservation and Sustainable Building Code ECSBC, which will be implemented through building bylaws of respective state governments. Sir, major amendment number 5, amendments in penalty provision to make the enforcement more effective. Penalty provisions are being differentiated based on the area of implementation sector, namely appliance industries and vehicles, etc. At the same time, penalty provisions effective large number of citizens are proposed to be rationalized under the objectives of enhancing ease of doing business and ease of living. Penalties regarding non-compliance with the ECSBC are being deleted, and this will be administered through provisions of building bylaws. Similarly, under Section 14, Clause C, the words sales or purchase of appliance are deleted, thereby keeping the accountability for prohibition and inefficient appliance limited to only manufacturer and importer. This will avoid undue harassments to the retailer, dealers, and the consumers, etc. Sir, my last point is other amendments. Number 1, inclusion of various ministries in Governing Council of Bureau of Energy Efficiency, BEE, for better functioning of BEE. And number 2, power to State Electricity Regulatory Commission to have smooth enforcement process are included. Sir, with these few words, I conclude my speech, and I wholeheartedly support the bill and request all the honorable members to support the bill to be passed. Thank you, sir. Thank you, Sri Maharaja Sanjova ji. Now, Honorable Srimati Priyanka Chaturvedi ji. Thank you so much, Honorable Deputy Chairman, sir, for allowing me to speak on a very important bill. So, with regards to the bill, it is the need of the hour that we look towards energy conservation as well as energy efficiency. However, I have a few points to make in this particular bill which needs clarity and confirmation from the Energy Minister, and I do it through you, sir.
Sir, the Act is allowing the central government to specify carbon credit trading scheme, energy consumption standards, specify standards for equipment and appliances, and also decide the penalties applicable. Now, penalties even on residential buildings will be decided by the central government, and which will have to be implemented by the state governments and, more importantly, the local governments. And not having them as part of this entire discussion mechanism, I think, is faulty to begin with. I had proposed, through my private member's bill, a climate change council board, which would be led by Honorable Prime Minister and which should have all the important state ministers deliberating on something like this. Because what problem state of Maharashtra may face in terms of energy conservation, energy requirements could be a lot different from what maybe Himachal Pradesh needs or maybe what Arunachal Pradesh needs. So it is important to have the voice of state governments also, because they would be the final adjudicator. We have spoken about how laws are made, implementations are difficult. This will head towards that. My second point, sir, is when they speak about jurisdiction. Jurisdiction, everyone has made a point. Manoj Haji also made a very valid point about Ministry of Environment and conflict with Ministry of Power. I would say jurisdiction should be done through an interministerial group, whether it is coal, whether it is urban housing, whether it is transport, whether it is civil aviation. All of them would have to be active partners to make this entire energy conservation an important factor to achieve our goals as committed by the Honorable Prime Minister at the COP26. However, there is no clarity on that particular thing. About regulation, again, residential building dispute. Who will be handling that? Whose jurisdiction does it come under? Are you all empowering the states to be able to adjudicate on matters like this? Can you have state boards to be able to communicate with the center and ensure that this bill, in true form, in true act, can provide the efficiency and conservation that we are seeking? We have seen the carbon trading. I mean, I've just been hearing about carbon trading. It sounds like it is a very important concept introduced globally. However, I'd want to know, don't we already have renewable energy certificate under the Electricity Act 2003, which promotes renewable energy? Don't we already have the energy saving certificate under the Energy Conservation Act of 2001 for promoting energy efficiency? The third, we also have a scheme, which is the PAT scheme, Perform, Achieve and Trade scheme. We set such low emission targets there, so it became so achievable that the certificates that were being issued, nobody wanted to buy them. So the carbon trading mechanism that you all are bringing about, I think this needs to be thought through. Initial auction of these carbon credits, I would want to know allocation of credits. Would it be done through an auction scheme, which I think Manoj Haji touched upon? But if it is done through an auction scheme, a lot of smaller companies, which would also need to participate in the carbon trading scheme if they are emitters of fossil fuels or carbon into the environment, it will be a very expensive cost for them to bear. So my request would be initially the allocation of credit schemes should be free of cost. Could be a time-bound manner. Now, in his initial remarks, the minister, when he was introducing the bill in the Lok Sabha, he had said that while introducing the bill, he had observed that India will not export carbon credit. If I'm not mistaken, this is what he had said. But however, global carbon offset market currently contributes 30 million carbon credits by funding carbon absorption projects in India. Don't you think this will hamper it if we do not allow carbon credits to be sold in the export global market? So I would say I would discourage him from looking at a ban, should look at more of, regulating that market. How much of it can we sell to global markets? Now, a lot of private companies, sir, have moved into a fuel mix, a green energy fuel mix already. Many of them have set 34% target, 50% target, 40% target, and they're working on it. My request would be a higher set of target should also be introduced for those who have already implemented. I won't call it penalizing them in any way. I would say that we will only make it more efficient by having private companies be a partner in creating this conservation ecosystem. In the non-fossil obligation, they have mentioned non-fossil fuel mix. But they haven't, sir, can we have the house in order, sir? Please, let us, we are having debate, आपस में कृपया बात न करें. Please.
Non-fossil fuel obligation is something that has been mentioned in the bill. However, the sources of energy have not been specified. What would be looked at as a non-fossil composition? So that is something we should be speaking about. Seasonality, affordability, and cost of renewables has already been spoken. However, my point would be larger. How will we ensure transport? How will we ensure distribution? And how will we ensure continuity of supply? Because India is going to be seeking more energy, will have more energy consumption as our GDP grows. Private consumption will also increase. How do we ensure there's an undisrupted power supply to at least those companies which are into manufacturing? And how do we look at storage cost reducing? That is also a part which we should be looking at. Most importantly, the last and most important point, and I won't take further time on this, we need to have even a price control mechanism. Biomass has also been mentioned as clean fuel in the amendments, which is appreciable. But as per a recent survey, price of biomass has absolutely doubled, and power plants are looking towards that, but now they're turning out to be unaffordable. So, like we have unregulated the fuel prices, many times we hear this, it's totally unregulated, market dependent. But at this point in time, when we're looking at a transition to newer energy resources, then we need to look at how we can control the price mechanism to ensure that people are encouraged to move towards renewable energy resources. So those are my few points, sir, and with that I rest my case, and I would request the Energy Minister to address this. Thank you so much. Thank you, Priyanka ji. माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी। माननीय उपसभापति जी, ये संशोधन विधेयक के समर्थन में मैं खड़ा हूँ। 2001 में मान्यवर ये विधेयक आया था और उसके बाद 2010 में इसका संशोधन हुआ और 2021 में पुनः इसके संशोधन के लिए लोकसभा में 2022 में पारित हुआ और सदन के समक्ष प्रस्तुत है। आज जिस तरीके की देश की और दुनिया के सामने ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, इसको लेकर के सारा विश्व चिंतित है और ग्लासगो में इसी को लेकर के तमाम देशों की बैठक हुई। उसमें बैठ करके चिंतन हुआ कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जा सकता है, कैसे इस पे अंकुश लगाया जा सकता है, 2 डिग्री सेल्सियस तक कैसे वार्मिंग को कम किया जाए, इस दिशा में कुछ वहाँ पर निर्णय उसमें भारत सरकार ने उसमें 5 तत्व जिनको कहा जाता है कि हमारे लिए ये 5 मुख्य कारक थे जिनको हमने उस ग्लासगो की COP26 की बैठक में हम लोगों ने निर्धारित किया। उसमें जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का, घरेलू कार्बन मार्केट को विकसित करना, भारतीय अर्थव्यवस्था को शीघ्र कार्बन मुक्त करने तथा पेरिस समझौते और जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न अन्य कार्रवाइयों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु कार्बन ट्रेडिंग और गैर जीवाश्म स्रोतों के अनिवार्य उपयोग जैसी नई संकल्पनाओं को अपनाना, कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने संबंधी कार्रवाइयों को बढ़ावा देना। ये ग्लासगो 2021 की बैठक में भारत ने इन पंचामृत जिन्हें कहते हैं, इन 5 तत्वों के ऊपर केंद्रित किया और मान्यवर उसी को लेकर के आज नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है। और जिस तरह से आप देखें कि हम लोगों ने तय किया था कि इथेनॉल का जो है पेट्रोल में मिलाने का काम, जो ब्लेंडिंग होगी, वो 2025 तक का लक्ष्य रखा गया था कि 10% एथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में की जाएगी। लेकिन भारत सरकार के प्रयासों से, माननीय मंत्री जी के प्रयासों से 2022 में ही हमने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और आज 2022 में ही एथेनॉल की ब्लेंडिंग 10% से अधिक होने लगी और अब हमने 2025 का लक्ष्य रखा है कि 2025 तक पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी। इसी तरह के बायोमास के माध्यम से भी हमें एनर्जी को उत्पादन को बढ़ावा देने का काम करने की दिशा में भी तेजी से प्रयास हो रहा है और हमारा ये प्रयास है कि हम जो गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दे सकें। और इसके लिए जो भी इस संशोधन में जो हमने प्राविधान किए हैं, जिससे कि जो बड़े भवन हैं उसमें जो 100 से और 120 मेगावाट से ज़्यादा जिन भवनों का बिजली का खर्चा आता है,
उनके लिए भी ये आवश्यक होगा कि वहां पर वो सौर ऊर्जा या दूसरे इस तरह के उपकरणों के माध्यम से ज़्यादा एनर्जी का उत्पादन कर सकें, और उनके लिए निर्धारित किया जाएगा कि कम से कम जितनी कंज्यूम एनर्जी वो करते हैं उसका एक हिस्सा इस तरह की जो नवीकरणीय ऊर्जा है उससे उसका उत्पादन वो करेंगे। ये उनके लिए, और ऐसा न करने पर उनके ऊपर दंड का भी प्राविधान होगा। इस तरह का भी व्यवस्था इस संशोधन में मान्यवर की गई है। इसके साथ साथ हमारा ये प्रयास है इसके माध्यम से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से शासी परिषद का गठन करना, ताकि हम इन नियमों का पालन कड़ाई के साथ कर सकें, और साथ ही ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की शासी परिषद के सदस्यों की संख्या जो है अभी उसको और बढ़ाने की बात हमने इसमें संशोधन में की है। मान्यवर ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता का दायरा भी बढ़ाने की बात इस संशोधन में कही गई है। कार्बन मार्केट विकसित करने की दिशा में सरकार को प्रयास करने होंगे। ऊर्जा संरक्षण नीति के अंतर्गत आवासीय परिसरों को सभी आवास, जैसा मैंने कहा कि जो बड़े जहां 100 मेगावाट से लेकर 120 मेगावाट तक का बिजली के उपभोक्ता जो भवन हैं उन सबको इस दायरे के अंदर लाना होगा, और उनको भी इन नियमों के अंतर्गत जो सरकार के निर्देश हैं उनका पालन करना होगा, जिससे कि हम नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, और हमारा ये प्रयास होगा कार्बन उत्सर्जन को जितना हो सके उसे कम करने की दिशा में काम किया जा सके। मान्यवर इन प्रस्तावित जो संशोधन है इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर हम प्राप्त हुए ऊर्जा के उपयोग करके देश में कार्बन उत्सर्जन को कमी लाने का प्रयास सरकार करेगी। मान्यवर इसके साथ ही 2023-30 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्मी ऊर्जा की क्षमता प्राप्त करना, ये हमने जो ग्लासगो की बैठक में जो हम लोगों ने तय किया था उसमें 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्मी ऊर्जा का उत्पादन हमें करना होगा। 2030 तक अपनी ऊर्जा संबंधी कुल आवश्यकताओं का 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से हमें करना होगा। जितना हमारे देश की ऊर्जा की खपत है उसमें 50% हिस्सा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का होगा। इस दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार विकास के लिए हमें तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा, और ये संकल्प भी भारत का है, और मैं समझता हूँ 2030 से पहले इस लक्ष्य को भारत जरूर प्राप्त कर लेगा। माननीय वर्तमान की तुलना में 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाने का लक्ष्य है। माननीय ये तभी होगा जब हम इस तरीके से गैर परंपरागत ऊर्जा को विकसित करेंगे, और कार्बन उत्सर्जन की जितनी कमी होगी इससे हमें निश्चित रूप से 1 बिलियन टन की कार्बन उत्सर्जन में कमी आ सकेगी। 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी में 45% की कमी लाना है, और 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है कि 2070 तक हम बिल्कुल जीरो कार्बन उत्सर्जन की स्थिति में पहुंचेंगे। ये लक्ष्य हमने रखा है। ये बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन जिस तेजी के साथ सरकार काम कर रही है मुझे पूरा विश्वास है कि 2030 तक हम इस लक्ष्य को, 2070 तक का जो लक्ष्य है उससे पहले ही इस लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकेंगे। मान्यवर जिस तरह से आप देखें कि एलईडी लाइट का हमने एलईडी लाइट का जिस तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग करके सरकार ने एलईडी लाइट को बढ़ावा देके बड़ी मात्रा में बिजली की खपत को कम करने का काम किया है, और इसी दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं कि देश में विद्युत का खर्च जो आवश्यक खर्च है उतना ही हो, कहीं अनावश्यक विद्युत का दुरुपयोग न होने पाए, और इसकी खपत को कैसे कम किया जाए, क्योंकि बिजली आज सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता और निरंतर आवश्यकता बढ़ रही है। जिस तरीके से हम विकास की गति बढ़ रही है, औद्योगिक विकास बढ़ रहा है, वैसे ही बिजली की खपत तेजी के साथ बढ़ रही है। लेकिन मान्यवर उसमें कार्बन उत्सर्जन की कमी करने के लिए हमको जो इस संशोधन में जो प्राविधान किए गए हैं, मैं समझता हूं सरकार उनको कड़ाई से लागू करेगी, और ये संशोधन पारित होने के बाद, ये विधेयक पारित होने के बाद निश्चित रूप से हम देश के अंदर जो हमारी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत उनमें तो विस्तार होगा ही, और हम कार्बन के उत्सर्जन में भी कमी लाने की दिशा में ठोस कार्यवाही कर सकेंगे। इसलिए इस जो विधेयक का पारित होना
मैं समझता हूं सदन के पक्ष विपक्ष से सभी सदस्यों ने इस पर सहमति व्यक्त की है और सर्वसम्मत से इस विधेयक को पारित हो। देश हित में है और आज की आवश्यकता है, वैश्विक चुनौती है। अगर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जिस तरीके से हमारे पर्यावरण प्रतिकूल असर पड़ रहा है और उसको लेकर सारी दुनिया चिंतित है, उसका एकमात्र लक्ष्य है कि हम कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम कर सकें, तभी ये ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कर सकेंगे और जीवाश्म ऊर्जा का जितना कम उपयोग कर सकेंगे हम, उससे उतनी ही तेजी के साथ हमें ग्लोबल वार्मिंग पर भी अंकुश पा सकेंगे। मैं इसके साथ ही इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी। ऑनरेबल श्री विनय विश्वम जी। Thank you, sir. Sir, I think that this bill has to be taken seriously, should be improved, should be changed on so many terms. And for that, I may request the government to refer this bill to the standing committee at least. The Energy Conservation Act, the primary act, was passed by the Parliament in 2001. This bill, amended, comes in 2022. The times have changed, and these changes are demanding all of us, pressing all the countries of the world, that conservation is a necessity. Climate issues have come to the fore. That's why in COP26, in all such international debates and meetings, climatic issues take the forefront place. Even in G20, the target was, I should say, climate. In the speech of the Prime Minister in the G20, he spoke about a nectar, Panjamurt, and that Panjamurt, most of the content was focused on climate issues. In that context, sir, I feel that it is not the Ministry of Power should pilot this bill. That should have been done by the MOEFCC. It was earlier only MOEF. Rightly, we added climate change also to that ministry. That means that India is responding sensibly to the changes. In that way, I think that there is a clash of interests in this bill. So I request to take up this point also seriously by the government. Then I have an apprehension. We are concerned about the carbon emission. The world as a whole think about reduction of carbon. And now we talk about carbon trade. This bill is mainly focused on trade of carbon. Trade is not the most important thing. Cutting of carbon use. Reduction is the carbon trade. We talk about reduction, reduce, reuse, the 3 R's. But you forget that. We talk mainly on trade nowadays. So trade is not going to help us. On this issue of carbon emission and global warming and climate change, no amount of trade will help us. In that way, this bill has to be altered fundamentally to see that measures to reduce carbon usage should be the main point to be attended. That's my point. Sir, as we see in all the bills moved by the government of today, centralization is the key point. This country is a federal country, not a unitary one. But this bill underlines the government politics of centralization. And we can see the Bureau of Energy Efficiency, the Bureau of Energy Efficiency, who control it? The main control is by the union government. Other ministries, other states, all are taken to the backbenches. That cannot be the approach of the government today. In that way also, this needs to be changed. And you talk about so many measures to be taken.
one question haunts all of us. Who is the regulator? Who is the regulator? Nobody knows. The bill is silent on that point. On the regulatory part of the mission and the task, this bill is disappointingly silent. That's why I would tell the government, please see that this should be addressed very seriously when you respond to the discussions here. Sir, you talk about the penalty, and that penalty is 10 lakhs rupees. In the earlier days, we took a serious term which called a doctrine, which was the polluter pays. And many people thought that it's a very positive approach, imposing the polluter to pay. But now what happens? This bill also preaches a new tendency. Let us first pollute and then to pay. Now the slogan is that you pollute and you pay. That is not the approach. Reduce pollution, reduce emission, control it, punish them. Instead of that, the government says them, you pay us money and you pollute us. We discussed this bill in Delhi, which is nowadays called as the capital of pollution. The air is polluted, surroundings are polluted, and this bill is also a supportive step towards pollution. That's why this bill needs to be overhauled thoroughly. In that way, the democratic and the parliamentary way to make it an efficient bill, effective bill, is to take it back to the Select Committee at least and to have a threadbare discussion there. Otherwise, I have the apprehension that this bill may fail. I want this bill to be positively guide the nation to a carbon-free surrounding. That's my intention. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Vinay Viswamji. Now, Mani Satish Chandra Dubey. धन्यवाद। उपाध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि मेरा टाइम कितना देर है, चूंकि मैं दूसरा बार जो आया हूं उसमें मिडिल स्पीच मेरा नहीं हुआ है। ये जानना चाहते थे कि मेरे लिए टाइम कितना है, उतना ही सर। 8 से 9 मिनट के बीच अपनी बात रखें। धन्यवाद। उपसभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण ऊर्जा संरक्षण संशोधन बिल विधेयक 2022 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको आभार। आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के दौर से जीवन यापन कर रहे हैं। पूरे विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक के स्तर में वृद्धि के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव और आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल के समग्र तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। साथ ही जनसंख्या वृद्धि के कारण हर तरफ ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। यह ऊर्जा कैसी हो, इसकी दक्षता कैसी हो, इसका व्यापार कैसे हो, यह आम लोगों तक कैसे पहुंचे और विशेष कर ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग हो इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित कर इस विधेयक को लाया गया है। वर्ष 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था और वर्ष 2010 में संशोधित कर बहुत नए कारक को जोड़ा गया। यह विधेयक देश हित में हरित हाइड्रोजन सहित स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को अनिवार्य बनाने और कार्बन व्यापार के लिए नियामक ढांचा स्थापित करने में योगदान करने वाला है। हमारी सरकार ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयास कर रही है, जिसके लिए बहुत सी कार्यक्रमों में तेजी लाकर और नए ऊर्जा सुधार लागू कर अच्छी प्रगति भी की है। भारत में 2016 में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता का समर्थन किया, जिसके तहत इसके सदस्य देशों ने सदी के अंत तक वैश्विक औसतन तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने का प्रतिबद्धता जताई। हाल ही में ग्लासगो ब्रिटेन में COP26 सम्मेलन में भारत 5 महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें पंचमित कहा गया है। भारत की गैर
जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 2030 तक 5 गीगावाट तक पहुंचाई जाएगी। भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरण ऊर्जा के पूरा करेगा और कार्बन उत्सर्जन को लगभग 1 अरब टन की कमी होगी। यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे सरकार के लिए। वर्ष 2014 से अब तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र का संपूर्ण कायाकल्प कर दिया है। वर्ष 2014 के कुल स्थापित बिजली उत्पादन की क्षमता 248,554 मेगावाट थी। अब पूरे देश में नियमित रूप से लैंड सैंडिंग होना एक कम आम बात थी। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने उत्पादन की क्षमता में 1,59,110 मेगावाट का समावेश किया है। अब हमारे पास 400 गीगावाट की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता है, जबकि अब तक की अधिकतम मांग 215 गीगावाट की रही है। एक देश एक ग्रिड पिछले 8 वर्षों के दौरान सरकार ने पूरे देश को एक फ्लिक्स वैसी पर चलने वाला एक विद्युत ग्रिड के साथ जोड़ा है। भारतीय ग्रिड अब दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत ग्रिड बन गया है, सबके लिए सुलभ। हमारी सरकार ने सत्ता में आने के पहले देश में 20,000 से अधिक गांव, हजारों बस्तियां बिजली से जुड़ी नहीं थी। 15 अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि 1,000 दिनों में प्रत्येक गांव में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य की घोषणा की। यह कठिन चुनौती थी, पर सरकार ने निर्धारित तिथि से 13 दिन पहले 987 दिनों में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इस उपलब्धि को 2018 की दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ी खबर करार दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने देश के हर घर को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य रखा। हमने इस काम को भी 18 महीना में पूरा किया। कुल 2.86 करोड़ घर बिजली से जुड़े हैं। एलईडी एलपीजी क्रांति हमारी सरकार की सत्ता आने के बाद 2 बड़ी क्रांति ऊर्जा क्षेत्र में हुई। एलईडी क्रांति दुनिया में कई आज भारत आकर देख रहा है और समझने का प्रयास कर रहा है। भारत ने जिस प्रकार इतना बड़ा कार्य आसानी से कर लिया, दूसरी एलपीजी क्रांति हमारी सरकार के लिए एलपीजी को गांव-गांव एवं घर-घर तक पहुंचा दिया। अब भारत के गांव में हमारी मां बहनें गैस के चूल्हे पर भी खाना पकाती हैं, लकड़ी नहीं जलाती हैं, बहुत कम जलाती हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य हर घर में रूफ टॉप लगाना और हर सिंचाई पंप को सौरकृत करने का है, जिसपे हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। इस संशोधन विधेयक का मैं संपूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और एक आग्रह मैं आपसे करता हूं कि मुझे याद है वो दिन कि 2005 में जब मैं विधायक के रूप में चुना गया था और उस समय जिस गांव में बिजली हुआ करती थी उस गांव को वीआईपी कल्चर से देखा जाता था। लेकिन 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, जिस गांव में बिजली हुआ करती थी उस गांव में ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था। बिजली 2 घंटे के लिए आती थी तो मोबाइल चार्ज के लिए बच्चे दौड़ पड़ते थे। उस कंडीशन में बिहार था और उस समय के एनडीए सरकार ने विधायक ऐच्छिक कोष से ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए अनुमति दिया, तो हम लोग बिजली